Sabrina nggak kalah.
Hello guys, am I audible? Okay, so a very warm welcome to one and all present over here and a very happy morning. So I would like to welcome you all in this our today's session organized by Agnish Tok and also the RCOEM Club Geek for Geeks. So my name is Vedika Vante and I'm from Electrical Department of YCC Nagpur. Before we start our event, there are some few points which are to be noted. Number one, have a laptop as it is a hands on session. Number two, that attendance will be noted in between the meeting anytime. So, guys, be prepared. And number three, that are the swags. So, talking about swags, that will be given to the winners of the giveaway. Certificates will be provided to those who will be filling the feedback form and only to the attendees of the session. So before we start, let us begin with a quote. So that is जरूरी नहीं रोशनी चरागों से होती है. जरूरी नहीं रोशनी चरागों से होती है. शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं. So moving forward, I would like to begin our today's session. So guys, you must be wondering that what is API, or some might be knowing about little knowledge about it. So for that, we are having our today's speaker, Mr. Saksham Tambe, who is Postman Student Expert YCC, and Kus Manoj, who is Postman Student Leader RCOEM. So now let's fasten our seatbelts to accelerate our journey towards API. I would like to invite Mr. Saksham from Electrical Department of Yashwantrao Chauhan College of Engineering, Nagpur. Saksham is Postman Student Expert and is also Executive Editor of departmental magazine Agnistok. Apart from that, he is also a president of the Astronomy Club Taransh of YCC and team member of Women Tech Makers WTM Nagpur. Over to you, Saksham. Right. Am I visible to all? Right. All right. Let me share my screen for a second. Everything is fine here. So is my screen visible to all? Yes, it's visible. All right. So hello everyone. Nice to meet you. I'm Saksham Tambe, the Postman Student Expert of Yashwantrao Chauhan College of Engineering, and as Vedika mentioned everything about me, thank you Vedika for that. So I want this session to be as interactive as possible, and everyone already know that there are giveaways in this particular session, as well as I know that I'm quite fast, but I will try to make my speed somewhat slower for this session. And yeah, how many people here are on LinkedIn currently? I want to know. Just put it on the chat box. I'll get it from there. Everyone right now should have at least a LinkedIn account because LinkedIn today is our latest Instagram, right? All right, I got a lot of yes. That's cool. If you don't have LinkedIn, just let's create an account. It's simple, and I know that YCC has currently given free giveaway of LinkedIn Premium, right? All right, good, good, good. Okay, so here. All right. What is an API? If we go according to the bookish knowledge lab, application programming interface, but application API is basically API is basically the backbone, the medium between the communication of two services. For example, if I want to know what is the weather currently and what I'm going to use, right? Mobile weather app, right? And if I want to know that what is going outside, or if I want to go somewhere, like I want to go outside, what I'm going to use? Google Maps, right? So what is an API? Basically, API, as I mentioned earlier, it is a communication. It helps us to communicate between two services, right? So rather than creating a service from the scratch, you can use APIs in rather than that. So a lot of companies provide APIs. Google, Facebook, every company provides API. API is basically Go.
order something, and you will get it in the request. It uses all that particular things. So there are a lot of types of API, like weather API, map API, as I mentioned, and Twitter also uses an API, sign in API, Spotify API. Spotify also uses an API. And if you use YouTube, right? So if you keep on scrolling, you click on it, every every process that YouTube does, scrolling, which gives infinite scrolling, in all that thing API has been used. And yes, when we are talking about API, you must be wondering that how API are used, right? Or how does an API works, right? So for that, I'm going to tell you that how an API works, right? So everyone must be familiar with this person here. Can I know his name? What is his name? The client I have mentioned here. Yeah, yeah, yeah. I hope everyone must be familiar with him. Recently, he has been gone after Big Boss. All right. Yeah. Okay. So we're going to take the example of Lord Puneet here. Yeah, yeah. As we know, recently he has got a big spike of followers. So Puneet superstar wakes up and opens his Instagram, and he wants to log in. So what he's going to do? He is going to put his credential, his username as well as password, and if what Instagram is going to do, it is going to send a request to the server. Let's go step by step, okay? Punish Superstar logins to Instagram, and what Instagram does, it's send a request to the his particular server, the Instagram server, which contains all the database. And if the credentials of Punit Superstar matches with the credentials, I'm audible to all. Some people are saying, okay, it's echoing. All right, just a second. All right, hello. Is it fine now? Yep. Okay, okay. So our Punish superstar, who is the client of Instagram, wake up and he wants to log into Instagram. So what he does, he put his credentials and password, uh, which is saved in the database of the servers of the Instagram. If the credentials of Punish superstar matches with the servers, he's going to get okay, yes, and in response he can log into his Instagram account, which is going to tell us that his Instagram page has been logged in. And if he has not got he has set the wrong password, for that also he is going to get some message like wrong password, try again, or he can also get the option of forgot password, as we can see here, and all that particular things. Just a second. Okay. And Punish superstar, as you know, you must be following him, right? Okay, so this is how an API works. Let's take one more example, the simplest one. You send the request to your crush. The request has been sent to your crush, right? So if your crush accepted, in response you'll get a follow back and a nice smile. And if she doesn't accept the request, oh my god, when will she accept? So simply, this is how an API works, and API are everywhere. Like every app we use contains an API, whether it is Zomato, whether it is Uber. Every app which we are using right now uses an API, because simply, I'm going to show you why it uses. So this is once a minute. You tell me that which code here looks better, the first one or the second one, the left one or right one, right? Yeah. All right, all right. Yeah, yeah. So as you can see that if you are creating some project, obviously you want it to be clean and good and as short as possible. So you won't be using this particular URL for your particular project, and you are going to use this JavaScript object notation file. So the output of the APIs is basically in JSON. It is so much simplified that, as you can see, no nothing, just collection ID and all that particular thing, rather than this big thing. Oh my god.
So what Postman does is simply provides you API which you can use in your projects, such as whatever project you want to make. It can be based on your imaginations. Like you want to make a weather project, you can make a weather project. Use the API of that particular weather project rather than making the whole weather from your sketch. Or example, you want to use Google Maps. You can't go directly uh, and take the data from the Google Maps, or you are going to create the whole Google Maps from scratch. Oh my God, what a long process! I know no one is going to do that thing. So for that, API are used, and Google provides a lot of free APIs. Like we can use APIs from the Google. I'm going to tell you. All right, just a second. So let me show you how the API works and how we can see that what is being processed and how we can see the APIs. Suppose, for example, let's is my screen visible? All right, it is. Let's log into Udemy. All right, Udemy. By the way, everything here also we what things we are doing is been powered by API. Today Meet also is possible due to API. The messaging we use WhatsApp also, that is also been due to API. Okay. So as we can see this particular interface here, so it gives us choices to log in from Google, log in from Facebook, continue with Apple. So if you all must be having a laptop, you can also use this feature to know that what request has been sent from the Udemy to other services. Udemy is a service, as we know that. Just click on inspect here, and this thing we can see that how all this is made. This is the HTML. This is all front end which we are seeing, but we don't know what is happening in back end, right? So in the back end we can see that what things are going happening. So just click on network, and here we can see that what are the requests has been sent to this particular places, and we can know that what is happening here, all the things JS, all the right. So we are going to click on fetch XSR wallet. Currently nothing is happening here. So if I click on Google, as you see that we have been here, right? I'm going to do split screen, just a quick split screen, and after that network. All right, so if I click on use another account, right, and if I go to next, is it visible to you all? Is it visible? Okay. You can try it on your own laptop also. Go to a particular website. You are going to see that what particular things happens there. So see, currently the, just a second, I have to do. All right, now I can easily see that what is going and what is happening in the Udemy's interface. Here everything is visible. By the way, Udemy is a great platform to learn all the things you want to learn. Here I can see that what request has been sent and everything. Simply, this is the best thing that Google provides us to know that what happens, everything beside that particular thing. So behind every click, the request has been sent, and the response we get here in JSON, as I mentioned earlier, in JavaScript object notation, right? We can see this only this 3 to 4 lines. This particular output we get, right? And in lifetime also you can see what's happening behind ourselves. So these are what is going on in the backend. Like the request has been sent and we are getting the response. All the API we are going to know the name, the status. This status you mustn't be familiar, right? It will be clear soon. Every doubt of you will be cleared easy. All right, the size of it, the time, and everything here you can know. Font or some everything you can know here. The best thing, Google. All right. Okay, talking about the Google, yeah.
Everyone must be wondering that what if I have this type of page in my own project also. Just a second, let me log out. Yeah, this looks great, right? This particular interface, you can have it in your own project. Just go to Google, search for Google sign in API. Google provides everything from scratch. Here you got your link here and all the process that how can you get this particular API in your website also. Everything you are going to get here. Just follow these particular processes and all that thing are here. Okay. After this, I want you to create a project which contains this particular sign in and all that things. Okay. So let me tell you one more example, right? So let me open our favorite application, YouTube, on which I nearly spend more than my 8 hours. I know. And if I search here a random particular theme like code, all right. So as we can see, this particular thing has been generated, right? HTTPS youtube.com result query. So I want to know that what this particular bar has been called, where this particular web page has been generated in the comment section. Does anyone knows? All right. Yes, yes. It is URL, but where do we type the URL? This particular bar I'm talking about. Yeah, yeah. Mhm. All right, it's address bar. So we type our address in our address bar. Like we should know the reason behind everything, what is happening, and what all is going on, right? So as we can see, this particular since we the previous address what was only youtube.com. So as I searched on Go, what happened is this new thing appeared here, like something. Is it visible? Ah, sorry guys, I can't zoom in, but you can do it on your own. I hope it's visible, right? I hope it is visible. So as I clicked on this particular thing, this result question mark search query is equal to go. This particular thing has been generated here, and if I remove even one particular question mark from here, let's see what our result gets. Oh my god, an error. Does a question mark matters? Oh my god, this much that it this the whole bit disappears. That's cool. So this is what an API is. In the address bar, what happens here? The result, the search query is equal to goat. As we can see, the thing which we search here, goat, comes under the search query. And as I click on it, or even if I click on that particular video, see, I got this particular thing. Watch a V video is equal to this the particular API of this particular video. All right, so let's move on. So how to use Postman, right? So in the Postman, we can use all these method easily. We can make a big URL, so much big URL into just this particular short thing, and we can use this all methods. Get method to retrieve information from a project. Okay, just a second. It's echoing. It's fine now. Okay. All right. So this here. The method here get, you all must be familiar with this protocol, HTTPS, right? And the path here, everything is provided in the API, and it will be covered soon in the hands-on session. So currently I'm going to tell you only this much about this particular thing, but soon is going to be cleared. All your doubts will be cleared in the hands-on session, that how to use it, and you can use this particular all the thing
by your own, and you can learn it also, and you can use it in your projects further. All right. So yeah, now coming here, you must be familiar with this particular fight which is going right now. Can anybody tell the glance of what is going on here? This particular. In the comment section, I want to know. Just a second. I'm talking about this currently, this particular thing. Yeah, yeah, yeah. All right, I'm going to address this particular thing. We are going to come to HTTP versus HTTPS soon, but currently I want to know about the particular thing which is going on in the screen right now. Elon Musk versus you must be knowing Mark Zuckerberg, right? Come on, guys, I love it interactive. Boxing match. All right, I'm going to give you all what is happening here currently. So, uh, Meta has launched its own platform. Sorry for the echoing. Okay, hello. So, Meta has launched its own platform, Threads, right? Which is just similar to our Twitter, but it can only be differentiated by all its working and all that particular thing. The company and the Twitter's its particular own database. So what is going happening currently is, see, if Twitter sends this request, Twitter want to access its particular database, right? So what Twitter does, it sends its request to the particular database where it's all the its information has been stored, and in return it gets the post, as we can see. Just a second, just let me zoom on. So Twitter is different and Thread is different. Just like that, Zomato is different and our Swiggy is different. Okay, so Zomato also uses Google Maps, and Swiggy also uses Google Map, as we all must be familiar with that particular thing. But what will be happening if, for example, I order something from Swiggy and I'm getting it in the server of Zomato? So much chaos, right? So the thing that has been ordered by the Swiggy are only be shown to the Swiggy's interface by its database. This is all done due because of API key, right? You will be addressed further what API key is and how does it works. I'm going to tell you just a little bit as a beginner. Okay, API key is provided to uniquely everyone. Like Twitter must be having its own API key, Thread must be having its own API key. Everyone has been provided with its own unique API key, which has been put here. As we can see, this particular thing, it also works on the basis of API keys. All right, the request that has been sent by the API key to the database, or suppose Swiggy wants to access the data Google Maps. All right, so it is not going to go and directly use the Google Maps. If something happened, then every other apps are going to come in one particular place, and there will be like a big huge chaos, right? So what as I mentioned earlier, that APIs, right? APIs just replicate that particular thing and it provides you, it supports you. You can also make that particular thing use in your project. All right. So what it's going to do, it's going to use the API. It's going to request the Google Maps that we want your API. I'm going to show. You can also access the API of Google Form.
Just a second. Google Maps. Here you can also get it. It's all simply Android user must be knowing that where can we get all this API. If you try all this, you can simply go just step by step. Just a second. Yes. Here from here we can get the Google Map API. We can use it, but we can't use it directly. What Swiggy is going to do, it's going to request the Google Map that I want your map API. Can I use it in your project? And yes, it's going to charge it some price also. And a lot of APIs are free and lot of APIs are costly, but Google basically provides a lot of APIs free, and we can also use the Postman API. It's totally free. You can use any API there. You can also know that how an API work, what its output. API also make your project simple. As I know, as I told you, the output it gives in the output of JSO and JavaScript object notation. It's just simple some lines. That particular lines you can use it in HTML codes. It's fully guided here, as you can see that which particular API I can use, or how can I use that particular API in my project. You can get all the things here. You can also use the Google Cloud API. Like Google Cloud provides a lot of API. Everything is available in the internet. We just have to see that where it is available. Simple Google APIs. Google also provides a lot of API, and even if you want to use here, how you can use the API, everything is given here. The documentation of all the things, and you can also get the API keys for free also, or you can also get it paid also. Just a second. Everything right now is available on the internet. Yeah, open weather map. So from here, all the data of the weather we can get it for free also. We can get it from the subscription also. Everything here is available. You can explore it later words. All right. Here I can get the API key. We just have to create an account here. We will get a free API key which we can use it in our weather application, or just simply whatever application you are making. I know, yeah, that most of the people are going to search as much shortcut as possible. So API is basically the shortcut for all the problems which we are facing here. All right. So here open weather, this is the best application that provides API for the weather apps. Like we don't know what is going to be weather tomorrow or day after tomorrow, so we can use it. Like we basically use the weather app that is provided. That particular app also uses this particular API which is called as open weather. All right. So let us move further to our slides. All right, HTTP versus HTTPS. So I would like to know from you all, what is the full form of HTTP? Hello guys, in the comment section. Hypertext markup language. Yeah. Hypertext markup language is HTML, not HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Yeah. Okay. Hypertext transfer protocol, right? So you all, whenever you search on Google, right, something, or let us think, as I've searched so many things here. Oh my god, it's quite shabby. So here you can see that HTTPS appears right now currently. This particular S, even if I remove it, it's not going to cause any problems, because Google always provides the security and to the sites. So yeah, you all should know, whenever you type in your address box, it appears HTTPS, and after that everything, the main body, and after that this thing, particular thing. This is currently our Google Meets. Okay. Yeah, S means secure. All right. So now let's come to this particular place. So
what basically happens is whenever you are logging through HTTP, which was used in the older version of browsers like internal Internet Explorer and older versions of Opera and all that particular thing. Now the latest browser have all that particular security. It comes with encryption. Recently, if you use all the web browsers, they come with HTTPS is basically, as you all know already, security, right? So what it does is this particular thing, you have the username of this particular thing and the password of this particular thing has been encrypted in the data server so that no one can see it. If your password is ABC123, it is going to encrypt it in the random encryption and decryption. You all must be knowing, right? I hope everyone has been knowing encryption and decryption. Okay, Yes. good, good. Yes. So what HTTP does is it encrypts your username and password so that no other person can know it. And for example, if you some particular random link right now, if someone sends a random link to you in your in your email ID or something other than that, you can also currently get what's happening. Okay, so you can also get, if you get some random link like you won the lotteries, you want this, you want that. I get a lot of mails from one that particular Dream 11 app and all that. And what if you click on it? Oh my god, suddenly a message appears, you have won the lottery, uh, you are you have won this, you have won that. And if you click on that particular thing, what suddenly happens? Oh my god, your data and everything has cleared and everything is gone. So this thing, all right, sorry for the background noise, there is some work going on in my neighborhood currently. I apologize for that. Okay, so you all must be cautious before clicking on any link which has been sent to you, and always see that the link that you are using is secure or all that. Yeah, such type of message appear like 150 रुपये देंगे link click करो and all that. So basically you have to stay cautious with these particular scams, and always update your browser. Some people are still using Windows 8 and all that particular thing. You should always use, I currently have browsers like this Microsoft Edge. This one is also updated, and yeah, Google Chrome browser is also updated. So this much browser I use currently. You should all, and in phone also you should always update your phone in 5 days, 4 days, in weekly. Yeah, normally update comes in the phone. So that's all. Like that's good. Yeah, Brave and Firefox are also good. Browsers also. You all should have to keep your browsers and all the information updated, as you should know that hackers can easily get your credentials, login and password from everywhere. All right, and let's move on further. All right. So everyone must be wanting a lot of certifications, right? Does anyone wants certifications rather than our Postman and Agni's talks? I want to know in the comment section. And these all are free ones, like you can just get it. I know most of the people must be knowing it, but some people who mustn't be knowing about this particular thing, I'm going to tell them that how can you access the free certificates. Okay, all right, so I have some links, as I see a lot of yes here. So uh, first of all, I'm going to tell you about the Toyota. Just a second.
So Toyota also provides a free certificate from HVDC, which you can get it just by logging. If you all are interested to do courses related to electrical vehicles, the Toyota has collaborated with ASDC, and from here you can get all your just log into the course, login credential, password, and make an account here. This particular interface does not use. Let's see what APIs does it use. Just a second. Currently, it's not showing anything. Login. Okay. I have not logged in currently, but you can see what. Whenever you click on a website, just go to this. You use what I've done currently. Go to inspect. Go to network, and just click on your username and password. Just yeah. I guess it's wrong password. That's why it's all right. See, something has opened here. We can easily see all the things that is happening here. If I go to this particular web page, and we can see what request it has been sent. As I mentioned earlier, the API key, right? The request, this particular request has been sent here to the database of this particular website ASDC, right? And the method, it also told about the method that it is the post method. Okay, the status code, we can know easily that what is going to happen. And as I said earlier that we get all the information here. We can see what is happening, the format also we can see, the request also we can see. You can get the certificate, all right. I'm going to tell you this all interface we can see here is the front end, but we all should also know that what is going on in the back end of this particular website. Google give us this best thing which can use to inspect. We can also see that how this website has been created from HTML, CSS, JavaScript, and all that particular thing, the body on all that particular thing. And the main thing is where we can see that APIs and all this particular step happen is this one. The request has been sent as I clicked here, and as you can see, after every click, see this many things are going on in the backend. Like it's going on continuously. It's just increasing. If my screen is visible, this many things keeps on going. And I can also see different things. Like if I click on image, I can access that particular image from here. It's currently not visible. Yeah, it is visible, but it's so small. And these are all the things which is being used in this particular website, the backend of this particular website. These are the images, these are the particular things which we can easily see being used in this particular website. All right, just a second. Okay, so this all we can know by the use of this particular feature. Okay, and we know, as I've told you, that how can we see all these particular things. The purpose of this particular thing has been clear to you, all right. I'm going to send this particular links in the chat box later, all right. So that's all. Thank you everyone. I hope you learned something new from my slides, and you are going to definitely use all that particular things and create your own website. Just a second.
Okay, guys, there's one more speaker. Okay. Thank you. Thank you, Saksham, for your words. I guess everyone must be having some kind of doubts about the API or any such doubts you guys are having. You can ask now to Saksham. You can use your chat. You can use your chatbot, or rather than you can on your mic and you can ask him. Okay, so does anyone has any question currently? You can Yes, just Aditya, do share you have any question? question in how to use it in code. Okay. Simply, if you okay, I'm gonna share my screen. Okay. For example, just a second. Let me share my entire screen. Is it visible? Google provides everything, as I mentioned earlier, that it provides a lot of APIs in free also and paid APIs also. So if I go click on Google Map API or all the particular, just let's see. Let me tell you about signing API, right? Okay, sir. Okay. So here if you go here, it's going to tell you that how can we use that particular API, where can we use that particular API. So this script, right, where can do we use our script, JavaScript, right? In the HTML project also we can use this particular script. It's everything is given here, you can just go through it and know that how can we use it, all the steps, how can we use it, how can we authorize that particular thing. You can get it from here also, and you can also see this particular thing. You can get it from your client ID, right? You can create your client ID at the Google. Just a second. This is Google identity. Okay, the sign in button and all that, it's all given here. Just go search and everything you can get it from here, like the HTML also, the script also here. Okay, just a second. If you want to make your own chatbot, just go simply search for chatbot API. Basically, if you want to create your chatbot, you can also use ChatGPT. It gives all the information about how can I see here. How can you use chatbot API? You can use this particular chatbot API. All the information you will be get here. The examples of it, how can you use it, how can you put it in your code. Everything is provided in this particular website. I'm going to put this particular website. All the information is provided in the Google itself. Just go through it. You can easily. Hi, Saksham. Hello, Shavish. I just want to ask that can API be exploited or it is vulnerable? No, API is basically secured. It cannot be exploited. It is as I told you earlier, that everyone has its own API key. The API key of Facebook is not being known by the API key of Twitter. If that particular thing happens, everyone will be like clashing, and it will be easily hackable. So API key is the most secure thing. Everyone has a unique API key, as I mentioned earlier. So it's just like I've given money. I only will going to get the thing which I'm buying. So it's not vulnerable, it's secured, and the particular client who has sent the request to the server, he or she is only going to get that particular output. Yeah. No, but it could be hacked by a phishing method also. No, no, no. Phishing basically means if this particular website search site, okay, uh, I have sent it in your uh,
WhatsApp link, and if a lot of people click on it, and the data of everyone, and I got the data of everyone, or it's a virus link, that is called phishing. Okay, I hope you understand what phishing is. Phishing is basically taking all the credentials of a person just by sending him a link or something like that. Sorry for this link, yeah. And what this API is, it's like a particular URL or like particular thing. Okay, sure, Alok, we will create a Discord. After I better than that, what I will do is I'm going to make this WhatsApp group open for all to chat after this meet ends. Okay, so that we can discuss all the later doubts here. Okay. Ha. And yeah, to prevent all the attacks, you should be updated as I told you earlier. You can create all the clones also of all the website by using APIs also. It will be the most simple way you can use. Okay, so does anyone has any more questions? Hello. Yeah, guys, you all should join the Discord of GFG also. There also you can get a lot of opportunities, and all the things, internships, and all that things. More will be explained by our push now soon. So, does anyone has any more questions? Yeah, hi Saksham. Hello, Shubham. Yeah, so I just wanted to know, like, let's say a beginner want to practice Postman. You already explained us about it. So, like, is there any sort of documentation to follow? Yeah, sure. You will get all the documentation. Is my screen visible to you all? Yes, yes, it is visible. The hands-on session will be soon covered by our coach. Okay, We are soon going to tell you. Kush will told you about it. Okay, is it fine? okay, works. Yeah. All right. So, does anyone has any more questions? If you have any more question, you can ping me on the WhatsApp group. I will just after this particular session, I'm going to make it open for all. Okay. Okay. Oh, sorry. Okay, guys. Thank you, everyone. I hope you liked the session, and I hope all your doubts must have been cleared. Okay. Over to you, Thank you, Okay. Vedika. Saksham. Thank you, Saksham. Thank you so much for your wise words. Now let's move forward, guys. So let's call our next speaker, Kush Manod, who is also president of Geek for Geeks chapter RCO OEM, as well as member of technical staff of GDG Nagpur. So let's welcome him, guys. सो हाय एवरीवन, कैसे हो यार सब? All good, Kush. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. हाउ वाज योर संडे गोइंग? अच्छा, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? राइट, ओके. Just a second, I'll share a tab so that you get the PPTs right. By the time, tell me, कोई ऐसा chat में बता दो, what do you understand by an API? Like अभी सक्षम ने समझाया, तो कोई एक एग्जाम्पल देते हुए समझाओगे कुछ कि एपीआई से क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को?
या फिर open your mics, it's fine. Ashwar is saying it's connection between two softwares. Okay, a gateway, fine. Gateway is sort of wrong. It is a mediator between a user and a data. It is a kind of a middleware between a user and the database. Enable two software communicate with each other. Fine, fine, fine. So you guys have a bit of wrong notion and a right notion. So we'll start with the basics. So if anyone wants to connect with me on any of the social media platforms, you can just scan the QR code. And by that time I'll tell you what APIs is. So can anyone tell me कि यार तुम लोग कितने लोग ऐसे होटल एंड ऑल में गए हो? कभी ना कभी हम लोग पार्टीज एंड बर्थडे पार्टीज या स्टफ के लिए वी गो टू रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, राइट? हाँ और एक है ना बे, आ तो जाओ व्हाट डू यू डू, लाइक तुम हम जब पहली बार गए, वी व्हाट ऑल वी डू इन अ रेस्टोरेंट, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जाने के बाद? अच्छे अच्छे जान ले। मेन्यू देखते हैं, ओके सेशन शुरू। फाइन। तो अभी तुमने मेन्यू देख लिया एंड यू सिलेक्टेड कि मुझे सपोज स्प्रिंग रोल या फ्रेंच फ्राइज मंगवाना है, तो व्हाट यू विल डू? कॉल दी वेटर, राइट? परफेक्ट। तो अभी वेटर को बुलाने के लिए तुम क्या करते हो? यू सेंड सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, तुम बुलाते हो, राइट? हाँ, so you make a request and the waiter comes, you tell him your order कि I want French fries, and then the request is then gone where? Waiter कहाँ लेके जाता है? To the chef, right? And chef फिर क्या करता है? Request को process करता है, right? ऑर्डर प्रोसेस करता है, परफेक्ट। एंड फिर जब तुम्हारा ऑर्डर रेडी हो गया तो वो किसको बुलाएगा फिर से? वेटर को। एंड वेटर को फिर क्या रिस्पॉन्स देगा वो कि फ्रेंच फ्राइज इज रेडी, गो एंड गिव इट टू दैट टेबल। यस, तो दिस इज व्हाट एन एपीआई इज। दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टोरेंट मॉडल ऑफ एन एपीआई। ठीक है, what you're doing is you're giving a request and you're getting a response. If your request is correct, then you will be getting the response. ठीक है, so we'll move further. This is what we were doing. हमने एक request भेजा, you got to the waiter went to the chef ने उसे dish दी and this came out. The same thing is like client gives an request to the API then goes to the server, and then from server if your request is correct, that is the main thing. हम API से क्यों भेज रहे हैं? Because we want to check कि हमारी request सही है या नहीं। अगर सही है तो it will be responded, and if it is wrong then error message would be sent. ठीक है, यहां तक हम लोग सब क्लियर है? ऑल गुड? Great. So we all know application programming interface is used for accessing data, mainly data from database. ठीक है, अब इसके अलावा we have another website. So तुम लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट देते होंगे, so we see a lot of लीडर बोर्ड वेबसाइट्स है ना, जिसमें यू विल बी हैविंग रैंकिंग्स 1 2 3 4 5 लीड कोड की दी होगी आज सुबह अगर किसी ने वीकली, तो उसका एक लीडर बोर्ड बनता है, या फिर कल शाम को बाय वीकली दी होगी किसी ने, तो उसका एक लीडर बोर्ड बनता है। सो दैट इज आल्सो यूजिंग एपीआई।
अब इसमें व्हाट यू विल बी गेटिंग इज कि तुम्हें रैंक मिलता होगा, देयर इज अ स्पेशल जेसन, हम लोग अभी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे इन 5 to 10 मिनट्स, तो उसमें तुम्हें सब दिखेगा. सो दिस इज आल्सो सम ऑफ वन ऑफ द वेबसाइट व्हिच इज मेड बाय जीएफजी आरसीएम चैप्टर, जिसमें हमने पूरा गिटहब की एपीआईज को यूज करके लीडर बोर्ड बनाया इन आवर ओपन सोर्स सेशन. तो दैट इज अनदर एग्जांपल जहां पे वी आर यूजिंग एपीआईज. ठीक है. Then next, there are also some other APIs. जैसे Saksham told you about the Open Weather API. We also have Google, Facebook, Twitter APIs. तो ये सब APIs तुम लोग यूज कर सकते हो. Recently there was a Twitter bot जो Twitter API को यूज करता था, and these were only 2 developers जिन्होंने Twitter की API यूज करके एक Twitter bot बनाया था, और उस Twitter bot को they sold at $25,000. 20 लाख रुपए में वो ट्विटर बॉट को उन्होंने बेचा. सो दिस इज हाउ योर प्रोडक्ट दैट यूजेस API can be sold or also can be monetized as a product, or and then you can further take it to startups. So APIs are pretty important into your any full stack application. ठीक है. So Postman is a industry software which is used by all the companies, like most of the companies. You can see big names here like Atlassian, PayPal, then Frontier, Capital One. These are all banking sectors and fintech companies that are using Postman for API testing. So you can see the importance of Postman as an industry software. So this is a good skill that you should have. This is covered request and response. Yeah. So अभी जब हम लोग hands on activity करेंगे ना, so you will be seeing these HTTP codes. HTTP codes यानी they try to tell you कि आपकी request and accept हुई है या नहीं हुई है. So if you get something in 200, 201 and 202, ऐसा 200 के multiples में कुछ मिल रहा है, so you will be like your request is processed and it is okay. If you get something in 400 की range में, so it is a bad request. 400 is a bad request because it is not supported. You are hitting a wrong URL. यहाँ पे हम जो URL हिट कर रहे होंगे पोस्टमैन में वो गलत हिट कर रहे होंगे, तो यू विल हैव टू चेक योर URL. फिर उसके बाद 401 इज अनऑथराइज्ड एक्सेस. अब ये सक्षम ने बताया दैट यू नीड API कीज, राइट. अगर आप ट्विटर की API ऐसे ही उठा के पोस्टमैन में डालोगे तो यू विल गेट दिस 401 एरर बिकॉज you are not authorized. You need to supply your API key with it, so that you get authorized, and then वो 401 error जाएगा. So authorized अगर तुम नहीं हो तो तुमको API की पक्के से लगेगी उसको एक्सेस करने के लिए. ठीक है. फिर you have 405 where you only have not allowed method is not allowed, and 406 it is not acceptable. लास्ट में यू हैव 500. 500 इज वेयर यू हैव सर्वर एरर. अगर कल कोई बाय वीकली दे रहा होगा, सो लीड कोड का सर्वर एरर आ रहा था स्टार्टिंग 10 मिनट्स के लिए, सो एट दैट टाइम यू वी वर गेटिंग 500 एरर. क्लाउड फ्लेयर का 500 एरर आ रहा था कल क्योंकि लीड कोड के सर्वर्स डाउन थे. सो दिस इज ऑल अबाउट HTTP कोड्स. HTTP कोड्स तक क्लियर है सबको? ऑल राइट. तो लेट्स मूव फर्दर. हाँ, ये हमने देखा था. क्लाइंट विल सेंड अ रिक्वेस्ट वाया नेटवर्क टू सर्वर एंड सर्वर विल सेंड अ रिस्पॉन्स. सो द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स थिंग इज डन बाय API. There are various methods in APIs. ठीक है. We'll have get method which will help you retrieve data. यानी तुमने database में कुछ dump कर रखा है and you will be getting a get method. चलो, I'll show you something. Like it is one of my projects called as employee management system which uses all these methods. ठीक है. So we have come over here and अभी तुम देखोगे पहले no employees था. I'll refresh, then you get some employees फट से. So what I have done is कि API ने get call लगाया है अपने database में जहां से he is getting all these information. ठीक है. अब get call करने के बाद में अगर हमें कुछ add करना है database में, अगर आपको कुछ add करना है, so like we'll have सक्षम का name,
and email. कुछ सैलरी दे दिया हम लोगों ने एंड आज की डेट ले लेते हैं एज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और फिर जब मैं यहाँ से अब ऐड पे क्लिक करूंगा ना, सो यू विल बी पोस्टिंग सम डेटा टू द डेटाबेस, यानी यहाँ से हमने जो डेटा फिल किया है ये आपके डेटाबेस पे पोस्ट हो गया है। अब व्हेन वील गो हियर आपको एक सेक्शन की भी एंट्री दिखेगी लास्ट में। सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। हमने डेटाबेस में एडिट किया, दैट वेंट एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट और अभी हम उसे गेट कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग दिस डेटा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर हमें एडिट करना है, लाइक अगर मेरे को सक्षम की ईमेल आईडी चेंज करनी है, सक्षम 123 कर दिया एंड देन अब व्हेन आई क्लिक ऑन अपडेट, सो द डेटा हैज बीन अपडेटेड एंड वील अगेन गो एंड सी यहाँ पे 123 आ गया। सो दिस इज अपडेट इज पैच और पुट। So we have seen three methods till now. Get method, which will help you retrieve data. Post method, which will help you send data to database. And anything you have to update, then you will have to use put या फिर patch. These are the two methods, ठीक है? And if you want to delete, then delete is the method. अगर हम सक्षम का data delete कर देते हैं, so it will data has been deleted and you get again 4 records, ठीक है? सो तुमको मेथड समझ में आ गए सबको? कूल। तो अब ऑल ऑफ यू गाइस गो, कितने लोगों का पोस्टमैन लाइक दे हैव इंस्टॉल्ड और दे हैव पोस्टमैन अकाउंट्स? ग्रेट। ओके, इफ यू डू नॉट हैव इंस्टॉल्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्टमैन वेब में भी चलता है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। व्हाट वील डू इज वील गो टू postman.com. लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग अभी हैंड्स ऑन एक्टिविटी शुरू करते हैं। All right, I hope the screen is visible. हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए हम लाइक पोस्टमैन लिखना सिर्फ, सो इट विल टेक यू टू postman.com. postman.com पे जाना एंड यहाँ पे साइन, इफ यू हैवंट मेड एनी अकाउंट तो साइन अप फॉर फ्री पे करना है, या फिर अब मेरा अकाउंट बना हुआ है, सो आई विल डू वन साइन इन एंड दिस विल लाइक मेरा है पहले से, सो इट विल टेक मी एंड आई विल साइन इन, ठीक है। तो तुम लोग जब साइन अप करोगे थोड़ा सा ईमेल आईडी पासवर्ड देके रिमेंबर द पासवर्ड एंड साइन इन ओवर हियर, ठीक है। ऑल द गाइस ट्राई योर साइन इन प्रोसेस एंड लेट मी नो कि कितने लोगों का हो गया है। जस्ट हिट अ यस इनटू योर चैट बॉक्स। We'll wait for 2 minutes सबके लिए। And someone was asking, तब तक everyone is installing या फिर signing in. Someone was asking कि how are we, like there is something to learn, right? तुम्हें अगर पोस्टमैन को अच्छे से सीखना है, सो वील हैव दिस हैंड्स ऑन सेशन जो तुम्हें पूरा पोस्टमैन रेस्ट एपीआईज कैसे यूज करते हैं वो सिखा देगा। एंड इसके अलावा इफ यू वांट टू एक्सप्लोर GraphQL एंड अदर थिंग्स, तो तुम लोग पोस्टमैन का एक स्टूडेंट एक्सपर्ट प्रोग्राम होता है, सो उसकी लिंक्स आएगी आगे पीपीटी में। सो वील टेल यू कि दैट स्टूडेंट एक्सपर्ट प्रोग्राम हम लोग अवेल कर सकते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड by the time you will complete, it is a pure curated course type thing
जिसमें you will be given some task, you have to complete those tasks, and at last you have to submit it. And when you successfully submit it, you get your postman student certificate. So that badge acts as a certification that you are postman student expert. And then later you can again take different programs of postman university and their community. ठीक है, तो सब लोगों ने like am I audible, right? So you guys can do that program also. ठीक है, so how many of you have logged in? Hand raise कर दो एक बार. Cool. देखो, वी आर हैविंग सम गुड प्रोग्राम्स. जैसे जैसे हमारी एक एक रिक्वेस्ट होती जाएगी, व्हाट यू गाइस कैन डू इज यू कैन पिंग अस ऑन ट्विटर, टेक योर स्नैपशॉट्स. जैसे ही तुम्हारा गेट रिक्वेस्ट आता है, टेक अ स्नैपशॉट. You guys can tag me or Saksham on Twitter, Instagram, and on even on LinkedIn, wherever you are posting. So we'll reply you back and repost your stories that you guys are doing some great work. And also don't forget to tag postman on your Twitter and on things like, yeah, if you want, so you guys can Max 45. just get the links over here. Fine. ठीक है, सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड. अब सब लोगों ने पोस्टमैन एपीआई खोल लिया. ठीक है, नाउ गो टू, नाउ वील हैव, आई विल सेंड यू लिंक, दैट इज अ वर्कस्पेस लिंक. हाँ, पहले वील सी द यूआई. ठीक है, अब जैसे तुम लोग पोस्टमैन खोलोगे, यहाँ पे go to somewhere like workspaces over here at the top and write create a workspace. तो तुम लोगों को यहाँ पे create a workspace पे क्लिक करना है. ठीक है, and it would be a public workspace. public select करना visibility में and write API 101 GFG X Agni YCC. ठीक है, and we'll create a workspace. ठीक है, अब व्हाट इज अ वर्कस्पेस. अब अगर तुम एक साथ 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो जहाँ पे एपीआईज यूज हो रही है, तो अगर तुम तीनों चारों की रिक्वेस्ट एक ही वर्कस्पेस में रखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज. तो हियर वी गेट अ ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग वर्कस्पेसेस. वर्कस्पेसेस यानी कैसा, तुम अब जैसे हम लोग एपीआई 101 कर रहे हैं, इसलिए मैंने एपीआई 101 नाम रख दिया. इफ आई एम वर्किंग ऑन माई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम रखूंगा. जैसे यू कैन सी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा मैंने नाम रखा हुआ है मेरे एपीआई का. और फिर आई हैव डन डिफरेंट रिक्वेस्ट जो मुझे काम आएगी मेरे ऐप बिल्डिंग में. तो अभी अगर तुम 3-4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो तुम्हारी 3 अलग अलग वर्क स्पेसेस रहेगी, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो डेवलपमेंट के टाइम पे. ठीक है, सबको वर्क स्पेसेस का चीज समझ आ गया. अब when we are into a workspace, we'll click on new and create a. अब आपको यहाँ पे दिखेगा, आप अलग डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो सॉकेट आईओ के लिए. लाइक whenever you're making some chat application, you will be using socket IO. whenever you're making some static websites, तो तुम GraphQL यूज करोगे. और अगर तुम डायनामिक वेबसाइट्स बना रहे हो तो HTTP रिक्वेस्ट यूज करोगे, राइट? तो अब हम HTTP पे क्लिक करेंगे, गेटिंग अ स्मॉल अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट. ठीक है, सब लोगों ने वर्कस्पेस बना लिया.
hit a thumbs up या फिर raise put a yes into the chat box कि ठीक है, you guys have made a workspace. Cool. We have almost 90 people resume, and most of the companies do ask for your API testing tools. I'll show it again if you want. तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर हम जैसे वर्क स्पेसेस पे जाना है, यहाँ पे ऊपर नैप बार में दिखता है, एंड देयर यू हैव टू यू गेट अ न्यू बटन ओवर हियर, क्रिएट वर्क स्पेस. तो तुम्हें क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और अपने वर्क स्पेस का नाम देना है. नाम देने के बाद में कीप इट एज पब्लिक. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस आएगा, आई विल क्लिक ऑन क्रिएट वर्क स्पेस. यहाँ पे कुछ नाम दे देना एंड मेक इट पब्लिक. ओके, और फिर यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करना, तो तुम्हारा वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा. एंड उसमें फिर आने के बाद राइट क्लिक ऑन न्यू टू गेट अ न्यू रिक्वेस्ट. अब वी हैव एन अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट. ठीक है, रिक्वेस्ट के अभी व्हाट विल डू इज कि आई विल सेंड यू अ लिंक जो भाई हमारा उससे टोनैलिटी नहीं मतलब थोड़ी डाइल्यूट हो जाएंगी. या हाँ मतलब तेजस आर वी गुड हो गया तुम्हारा? यस. तो नाउ लेट्स सी, हमारे पास है ना पोस्टमैन के वी हैव सम थिंग्स लाइक यहाँ पे तुम्हें एक रिक्वेस्ट चेक करना होता है. हमने अभी पढ़ा गेट पोस्ट पुट पैच एंड डिलीट. सो दैट इज द थिंग, तुम क्या रिक्वेस्ट मेंशन कर रहे हो और फिर आगे यूआरएल तुम्हारे बैकएंड की. and we have different types of data. आज we will be discussing the JSON data and HTML data. ठीक है, so we'll go again. हाँ ठीक है, so I'll copy this link for you guys, chat में डाल देता हूँ. and this is a workspace. तो हमें कुछ नहीं करना, we have to click on this. तो वो तुम्हें एक वर्कस्पेस पे लेके जाएगा. ठीक है, API Postman Student 101 workspace. Now what you have to do is you have to fork this workspace. हम लोग क्या करेंगे, वी हैव दिस एंड पॉइंट यूआरएल. ठीक है, आई विल कॉपी दिस यूआरएल एंड सेंड यू गाइस इनटू द चैट. ठीक है, ये api101.up.railway.app ये एक यूआरएल है जो हम लोग पोस्टमैन को देंगे फॉर टेस्टिंग. ठीक है, एंड वी आर हैविंग डिफरेंट पाथ्स ओवर हियर. तो देयर विल बी वील हैव दिस, आई विल टेल यू वन पाथ और तुम एक दूसरे पाथ पे टास्क परफॉर्म करके सोशल मीडिया पे हमें दिखाओगे कि यू गाइज हैव डन इट. ठीक है, तो लेट्स गेट ओवर हियर. आई विल क्रिएट अ न्यू कलेक्शन जिसका नाम मैंने रख दिया API 101 GFGX YC. हाँ कूल. एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, वील बी हैविंग, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा जब ये क्रिएट हो जाएगा, सो राइट क्लिक ओवर हियर एंड ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना. ठीक है, सो यू गेट अ न्यू रिक्वेस्ट. एंड हम जब भी रिक्वेस्ट बना रहे हैं, सो इफ यू आर गेटिंग अ गेट रिक्वेस्ट, तो नाम कैसा रखना है, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल टेस्टिंग, जिसमें हमें नेम इज लाइक व्हाट रिक्वेस्ट यू विल बी डूइंग, गेट
एंड फिर हम जोक एपीआई यूज करने वाले, सो हम लिखेंगे गेट जोक. ट्राई टू यूज कैमल केसिंग सो दैट इट इज easier to understand. अब गेट जोक करने के बाद में we'll paste this API रेलवे 101 वाला लिंक एंड यूज स्लैश में जोक ऐड करेंगे एंड we'll send गेट रिक्वेस्ट. तो तुम्हें रैंडमली कोई एक जोक आएगा, ठीक है. What we are getting is programming rule of first rule of programming, if it works don't touch it, ठीक है. यहां तक everyone has done their get requests. Okay, sure. तो देखो, we have made this new collection, ठीक है. अब इसमें मैंने क्या किया, जब आपका कलेक्शन बन गया जस्ट क्लिक ऑन न्यू पे यू विल हैव टू चूज एनी ऑफ द रिक्वेस्ट टाइप्स. तो हम यूज कर रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है. अब HTTP रिक्वेस्ट यूज करने के बाद when you will have to paste the URL, this is the URL I gave you in chat, और उसके बाद में आगे आपको सिर्फ जोक ऐड करना है एंड देन सेंड. So what I have got is you will randomly get some joke out of the API, ठीक है. सब आर वी गुड टिल हियर, लाइक अभी सबको समझ आ गया. अगर किसी को कोई दिक्कत भी हो रही तो दे कैन प्रेजेंट देयर स्क्रीन, ऐसी कोई बात नहीं है. बिकॉज अभी अगर तुम एक बार गेट रिक्वेस्ट करना सीख गए तो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर फॉर अपकमिंग रिक्वेस्ट. बस एक गेट रिक्वेस्ट सही से करना है, ठीक है. ओके, यूर डन. तो अब कि अच्छा, किसी को बहुत सही जोक आया है क्या, बहुत हंसने लायक, जस्ट पुट इन योर चैट में डालो कौन से जोक्स आए. अच्छा, ऐश्वर्य हो गया. आफ्टर पेस्टिंग द लिंक व्हाट वी हैव टू डू, राइट. सो व्हेन यू पेस्ट द लिंक उसके आगे स्लैश जोक रखना. दिस इज द लिंक व्हिच यू हैव टू पुट इट इन द सर्च बॉक्स एंड उसके बाद में यू जस्ट हैव टू सेंड इट, ठीक है. सेंड करोगे तो यू विल गेट सम डिफरेंट APIs. लाइक अभी मुझे देखा कोडर CEO का ID1, देन ID2, एक और बार सेंड किया ID1 आया फिर से रैंडमली, ID2, फिर ID1 2, सो इट इज ID4 आया अभी. सो इट इज लाइक रैंडमली तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा. श्रुति हो गया. ग्रेट. तो अब मुझे कैसे पता चला, लाइक यू माइट बी वंडरिंग कि आगे स्लैश जोक ही क्यों लगाना है, मुझे कैसे पता चला. तो व्हाट यू हैव, जहां से हमने फोन किया वहां पे एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है. एंड पॉइंट URL दिया है जिसे हम यूज कर रहे हैं एंड आगे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 पार्ट्स, एक स्लैश जोक, एक स्लैश कोट एंड एक स्लैश बुक, जो आपको जोक्स API, बुक्स API एंड कोट्स API पे लेके जाता है. यू कैन यूज ऑल दीज मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट. और उसमें अब जैसे यूजिंग द API में हमें दिया है कि स्लैश जोक में यू विल बी गेटिंग सम रैंडम जोक, ठीक है.
अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक जोक ढूंढना है, यू हैव टू सर्च अ जोक. अब जैसे आई गेस ID4 वाला बहुत अच्छा जोक है, सो व्हाट विल डू इज /4 भी क्लिक गेट करना. सो विल बी गेटिंग अ ID4. अगर हम वही जोक के आगे ID2 करेंगे तो हमें ID2 का ये मिलेगा. सो व्हाट विल डू इज कि ये रिक्वेस्ट को हम ऐसे ही रहने देते हैं, सेंड में सेव कर देंगे. यू कीप इन माइंड कि जैसे ही आपका टेस्टिंग पूरा हो जाता है गेट वाला, यू विल सेव इट. देन वील अगेन एड अ रिक्वेस्ट एंड व्हाट विल डू इज सर्च जोक. ठीक है, अब हम लोग कोई जोक सर्च कर रहे हैं, सो वील बी हैविंग सर्च जोक. ठीक है, सो तुम लोगों का अगर सर्च जोक चल रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि सेम URL में जब हम लोग /जोक लगा रहे हैं, उसके आगे /पुट ID नंबर फ्रॉम 1 to 5. ओके, कुछ जा रहा है क्या? उठा है. क्या बोल रहा है? जा रहा है? कितने देर में? आधी घंटे 1 घंटे में. नहीं रुकेगा कुछ को इतने देर? वो कुछ को आना है पर उसको थोड़ा 11:30 बजेगा, चलेगा क्या? हाँ 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 वैसा. ऑल राइट, तो सर्च जोक डन हो गया. हाँ हाँ तो ग्रेट, तुम लोगों का अगर सर्च जोक हो गया है तो व्हाट विल डू इज हम लोग अब खुद से जोक ऐड करेंगे. मैं एक रैंडम प्रोग्रामर जोक ले लेता हूँ. We'll go to 11 funny jokes. नहीं आसपास लगाना. कुछ अच्छा मिल रहा है? और फुल रहने दो. नहीं. अच्छा ठीक है ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे अपन. तो 40 घंटे. सो लाइक व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिकर्शन, ये हमने कॉपी कर लिया. ठीक है, अभी मेरे को बताओ चैट में फट से कि अगर आई हैव टू सेंड सम जो डेटा इनटू एनी डेटाबेस या फिर कहीं पे मुझे कुछ भेजना है, तो व्हाट रिक्वेस्ट विल आई यूज. जैसे हमने अभी गेट यूज करी, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? शुभम इज सेइंग पोस्ट और ऐश्वर विश्वेश पोस्ट बोल रहा है. रिचा इज सेइंग पोस्ट. ऐश्वर्य निखिल पुट गलत है. विल बी यूजिंग पोस्ट. I told you put is for editing. You have to update anything into your database, तब हम लोग put यूज करेंगे. ठीक है, so cool. You guys are saying post, हम लोग post यूज करेंगे. So अब जैसे ही मेरा न्यू रिक्वेस्ट आ गया है, एड रिक्वेस्ट पे क्लिक किए एंड आई राइट. अब इसका नेमिंग कन्वेंशन कैसा रहेगा वो भी डालो. अब वी आर यूजिंग सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो उसके लिए हम लोग कैमल केसिंग तो यूज करेंगे, वो बराबर है. बट व्हाट विल यू नेम द कलेक्शन? जैसे पहले हमने गेट जोक किया था तो वैसे राइट जोक नहीं. व्हाट रिक्वेस्ट आर यू यूजिंग? यू गाइज आर यूजिंग पोस्ट, तो हम लोग पोस्ट जोक लिखेंगे.
ठीक है, कीप दिस इन माइंड कि whenever request you are using जैसे post joke, oh sorry, इधर, and here again we'll be pasting the URL API 101 up.railway.app/joke, और यहाँ पे रिक्वेस्ट अब गेट से हम कर देंगे पोस्ट। ठीक है, पोस्ट करने के बाद में यू विल हैव टू सेंड समथिंग, है ना। तो सेंड करने के लिए पहले हम आएंगे बॉडी पे, एंड बॉडी पे आने के बाद में यू विल हैव टू सेंड अ रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा में टेक्स्ट पे आने के बाद आप जेसन सिलेक्ट करोगे। हमने क्या किया, हम बॉडी पे आए, बॉडी पे आने के बाद में रॉ पे आए, एंड रॉ पे आने के बाद में हमने जेसन डेटा सिलेक्ट किया, जेसन डेटा सिलेक्ट किया, और उसके बाद में हमने दो कर्ली ब्रेसेस खोल के व्हाट वी हैव टू मेंशन इज, you have to mention your author, who is the author, what is the joke and what is the source। ठीक है, तो हम लोग डालेंगे एक थिंग एज ऑथर, इट इज मी, तो मेरा नाम डाल देता हूं। फिर ऑथर के बाद में हम लोग डालेंगे जोक, लाइक इट इज जोक ओनली, तो हम लोग जोक डालेंगे, और जोक में हम लोग पेस्ट करेंगे आर जोक, एंड फिर डालेंगे सोर्स। गूगल, ठीक है, एंड व्हेन आई सेंड, तो उसने क्या बोला, देखो व्हाट यहाँ पे 201 लिख के आया, 200 मींस योर रिक्वेस्ट इज ऑलवेज फुलफिल्ड। ठीक है, हॉवर करने पे दिखा भी रहा है कि आपका ये रिक्वेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, एंड देन इट इज शोइंग टाइम, लेटेंसी बता रहा है। लेटेंसी क्या है कि आपका कितने टाइम में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फुलफिल हो गया। तो इट इज ऑल्सो टेकिंग कि टीसीपी हैंडशेक के लिए कितना टाइम लग रहा है, एसएसएल हैंडशेक के लिए कितना टाइम लग रहा है, डाउनलोड एंड ट्रांसफर के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो सब यहाँ पे डिटेल में आ रहा है व्हेन यू होवर ऑन द टाइम, एंड दिस इज द रिस्पॉन्स साइज बाइट्स में। अब तुम देखोगे आईडी आई है मेरे पास में, आईडी ऑटोमेटिकली आई है बिकॉज एपीआईज पुट देयर आईडीज ऑटोमेटिकली। तुम्हारे हर एक की अपनी अपनी अलग आईडी आई होगी। तो अगर अपने को अभी सेम जोक सर्च करना है, तो कम ऑन सर्च योर जोक, तुमने क्या जोक डाला, और फिर जब तुम सर्च करोगे तो पुट दिस जेसन इनटू द चैट फॉर माय रेफरेंस। ठीक है, yes it is compulsory author and source डालना, then you will not be able to accept कि तुम्हारी API पोस्ट नहीं होगी। या सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, डू इट एज जेसन। ठीक है, तुमको जेसन में डालना है व्हाट, दिस इज द स्क्रिप्ट। पहले क्या करना है, हम पहले यूआरएल सेट करेंगे, यूआरएल सेट करने के बाद में यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करना, पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद में हमें कुछ भेजना है। सो क्या भेजना है, वो भेजने के लिए हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो वो टाइप करने के लिए वी आर गोइंग टू बॉडी सेक्शन, बॉडी पे गए, एंड देन यू आर गोइंग टू स्पेसिफिक रॉ फॉर्मेट, एंड रॉ फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें सिलेक्ट जेसन एंड देन पोस्ट दिस। रजत, अभी समझ में आया? आई हैव रिपीटेड द प्रोसेस अगेन। ओके, तो सब लोग अपने अपने जेसन्स डालो, जैसे मैंने इस फॉर्मेट में मुझे जेसन आया, यहाँ से कॉपी करना, आईडी के साथ आना चाहिए, एंड या आई एम शोइंग माय स्क्रीन, ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। फाइन, तब तक किसी को कुछ डाउट होगा, यू कैन ओपन योर माइक बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी दी चैट्स एंड शो माई स्क्रीन एट द सेम टाइम। किसी को कुछ भी डाउट है विच यू आर प्लानिंग टू आस्क एट द एंड, बीच में भी पूछ सकते हो व्हेन वी आर गेटिंग दीज फिलर टाइम्स, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस।
कुछ कैन यू टेल लाइक पैच रिक्वेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है? Put and patch both are used for send updating your data. Like अगर जैसे हमने employee update किया था, सक्षम की email ID 123 ऐड किया था, so that is patch and put. तो put हम लोग तब यूज करते हैं when you we have to single यानी एक ही डेटा को यानी एक ही कॉलम या रो को अपडेट करना है, और पैच जब आपको एक साथ मल्टीपल रोज या मल्टीपल थिंग्स आपको अपडेट करनी है तो हम पैच यूज करेंगे. दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर यूज फॉर अपडेटिंग. सिर्फ एक में सिंगल और एक में मल्टीपल, ऐसा डिफरेंस होता है. ओके ओके या थैंक्स. यू आर वेलकम. ठीक है. रजत का आया है, आई एम अ डेव एंड आई एम लर्निंग जोक. गुड. यू आर नॉट एबल टू सेव बिकॉज तुमने कलेक्शन नहीं बनाया अभी नहीं, तो इसीलिए. सो अभी के लिए यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई दीज रिक्वेस्ट एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर मेकिंग एन एपीआई तो तुम पहले कलेक्शन बनाओगे एंड उसके अंदर ऐड दीज रिक्वेस्ट्स. ओके. HTML is programming language. Nice. I am a programmer and learning to joke. Fine. Shubham guys, who is C? It is a beat. Sorry, spelling mistake. Nice. Great. Cool. अब मेरे को बताओ, तुमको तुम्हारा जोक सर्च करना है, तो what we'll be doing is we'll again make a request कि मैंने भेजा हुआ जोक सच्ची में गया कि नहीं गया. Add a request and we'll write search joke. Get request है API1/joke/ मेरा क्या था पोस्ट में 3146 राइट. तो अभी हम /3146 सेंड. आ गया ऑथर कुश एंड थिंग. तो ऐसा सेम तुम्हारा भी आना चाहिए व्हेन वी आर सर्चिंग योर ओन जोक. तुमको सिर्फ स्लैश के आगे तुम्हारी आईडी डालनी है सो दैट यू कैन सर्च थिंग्स. ठीक है. सेव दिस एंड आफ्टर सर्चिंग वील नाउ ट्राई टू अपडेट थिंग्स. ठीक है. तो एड अ रिक्वेस्ट अपडेट जोक. ठीक है. एंड अगेन वील एंटर दी. अब तुम्हें एक स्पेसिफिक जोक अपडेट करना है राइट. यस, वील बी यूजिंग पुट मेथड. अब तुम्हें स्पेसिफिक जोक अपडेट करना है तो तुम कौन सी यूआरएल यूज करोगे, स्लैश वाली, स्लैश जोक वाली, या फिर स्लैश जोक स्लैश आईडी वाली? स्लैश आईडी. ओके, स्लैश आईडी. स्लैश आईडी. हाँ. अब हम स्लैश आईडी क्यों यूज कर रहे हैं वो बताओ. अब बिकॉज हम वो स्पेसिफिक जोक को टारगेट कर रहे हो वो स्पेसिफाई करने के लिए. राइट राइट राइट. फॉर अ पर्टिकुलर जोक. सही है. तो शुभम एंड ऐश्वर्य दोनों ने सही बताया. सो इसीलिए हम लोग स्लैश आईडी वाला यूज कर रहे हैं. एंड अब स्लैश आईडी में वील बी यूजिंग अ पुट मेथड. ठीक है. अब पुट में भी तुम लोगों को देखना है कि व्हाट यू विल बी यूजिंग. अब जैसे हियर वी हैव टू ऐड आवर आईडीज आल्सो. तो अपडेट में हम फिर से बॉडी पे जाएंगे. बॉडी में जाने के बाद हम फिर से रॉ सिलेक्ट करेंगे बिकॉज वी हैव आवर जेसन डेटा टाइप. एंड हम जेसन पे क्लिक करेंगे एंड /3146 वाली यूआरएल यूज करेंगे. फिर से कर्ली ब्रेसेस बनाओ एंड जो मैंने तुम लोगों को डाला था ऑथर एंड ये करके व्हाट वील डू इज आई विल जस्ट मेंशन की चेंज द जोक. ठीक है. और हम सेंड करते हैं. तो हमें क्या एरर आ रहा है, 404 नॉट फाउंड. दिस इज द एरर बिकॉज यू आर हिटिंग द रॉन्ग यूआरएल, या फिर हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. तो लेट्स सी. आईडी ऑथर जोक सोर्स एंड बॉडी जेसन रॉ. ओके. तो आई गेस
अगर हम इसको ऐसे कर लेंगे तो चला जाए मे बी, नो, /3146. अच्छा, we do not have permissions to put this. What we can do is put, अगर हमें 2 पे मिल जाएगा I guess, 2 पे okay, so update joke में it's like चीजें तो हम सही ही कर रहे हैं. If I send this, तो करो and यहाँ पे it's like just joke और this is put. ठीक है, डन. तो we'll have, ठीक है ठीक है ठीक है, I'll tell you again. तुम्हें कुछ नहीं करना है. तुम्हें, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक स्पेसिफिक आईडी पे पहले ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, बट वी आर सेंडिंग दी आईडी विद आर जेसन, तो इसीलिए हम लोगों को वो स्पेसिफिक आईडी हिट करने की जरूरत नहीं है. ओके, तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे को जब सेंड करना है तब वील बी चेंजिंग दिस मेथड विल बी पुट. तुम जो मेथड है उसे पुट रखा और उसके बाद में स्लैश जोक पे हमने हिट किया. बट सिंस वी आर सेंडिंग दिस आईडी, तो तुम लोगों को सर्च उसी वो आईडी को ही अपडेट करेगा. और ऑथर मैंने कुछ रखा है ना, आई चेंज, मैंने जोक चेंज कर दिया. ठीक है, तो तुम लोग भी जोक चेंज करके एक बार सेंड करके देखो. और हम लोग एक बार फिर से सर्च जोक पे जाते हैं एंड वील सेंड दिस. तो यू विल सी चेंज्ड द जोक, अपडेट हो गया है डेटाबेस में. ठीक है, हम लोग दो गलतियां कर रहे थे. एक, पहला कि हम लोगों को आईडी शुड बी सेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, और दूसरा कि URL स्लैश आईडी ना होते हुए स्लैश जोक ही रखनी है. बट आइडियली जब आप डेवलपमेंट करते हो, लाइक वेन एवर यू, जैसे मेरी ये एडिट वाली है, सो लोकल होस्ट 8000 स्लैश एम्प्लॉय स्लैश आईडी ही भेजते हैं हम लोग, बिकॉज हमारा डेटाबेस स्कीमा अलग होता है. जैसे मेरे डेटाबेस स्कीमा में यू कैन सी आईडी है कि नहीं, क्योंकि मैंने राउट ही ऐसा बनाया कि स्लैश आईडी पे ही कोई चीज एडिट या अपडेट हो पाए. तो सेम वैसे ही पोस्टमैन ने उनका राउट ऐसा बनाया कि स्लैश जोक पे ही हो, एंड आईडी यहाँ से जेसन में से कैप्चर करेगा. नाइस, ऐश्वर्या का एक हो गया. अब हमें हमारा नेक्स्ट टास्क इज ट्राई डिलीटिंग योर जोक. ग्रेट, शुभम. यस, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो डिलीट करने का. अगर नहीं होता है तो देन यू कैन फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग इन अपकमिंग 2 minutes. ग्रेट, ऐश्वर्या का जोक डिलीट हो गया. ओके ओके, यू माइट बी टू सी माय स्क्रीन. तो पुट में यू विल बी हैविंग पुट, तुमको आईडी डालना है एंड देन दिस थिंग. ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग 204 ओवर हियर. तो इट इज सेइंग कि सक्सेसफुली प्रोसेस्ड द रिक्वेस्ट, बट इट इज नॉट रिटर्निंग एनी कंटेंट, इसीलिए 204 आ रहा है. अगर कोई कंटेंट रिटर्न हुआ होता तो 201 या 200 आता था. कूल कूल कूल, सबके हो गए एडिट. विश्वेश का भी डिलीट हो गया.
विश्वास का भी डिलीट हो गया। आलोक को क्या एरर आ रहा है? अच्छा, जिनका डिलीट हो गया है, नाउ मेक अ न्यू कलेक्शन। एक न्यू कलेक्शन बनाओ, उसको लिखो कोट कलेक्शन, एंड देन जहां पे हम लोग स्लैश जोक यूज कर रहे थे वहां पे यूज स्लैश कोट, एंड यू विल बी गेटिंग अ कोट एपीआई। तो अब तुमको क्या ऑपरेशंस करने, यू हैव टू गेट अ कोट, यू हैव टू सर्च अ कोट, एंड यू हैव टू ऐड अ कोट। और उसके बाद में तुम्हारा एडेड कोड सर्च करोगे एंड ट्राई टू एडिट इट। इन सबके तुम फोटोज लेके यू कैन टैग अस, जो भी टैग करेगा उसको भी एक रैंडम पर्सन को विल बी हैविंग अ गिव अवे, ठीक है। तो यू कैन टैग अस ऑन ईदर ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर और लिंक्डइन, जहां पे भी तुम अपनी लर्निंग्स शेयर करते हो वहां पे यू गाइस कैन पुट दी फोटोज एंड टेल कि यस यू गाइस हैव डन लर्न समथिंग गुड फ्रॉम दिस वर्कशॉप। तो जितने भी लोग एक्टिवली अभी तक हैंड्स ऑन एक्टिविटी में थे, इट इज अ गुड चांस फॉर यू गाइस कि तुम लोग कुछ नया खुद से एक्सप्लोर करो, एक नई एपीआई टेस्ट करो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज स्लैश कोट यूज करना है, ठीक है। दिस इज द एपीआई एंड पॉइंट स्लैश कोट। सब लोग जो भी सो दैट वी आर एबल टू टेक यू, क्योंकि यहाँ पे चैट्स में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ आलोक, तुमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी वो बताओ। डिलीट नहीं हो रहा है, आईडी नॉट स्पेसिफाइड आ रहा है। आलोक, हो गया क्या अभी? यस हो गया, राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो लेट मी सी if any one of you is चलो ठीक है, we'll delete। अभी लास्ट हमें एक रिक्वेस्ट है, add request delete joke। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे delete मेथड। we'll be putting /3146 वाला API and we'll send। तो 200 ओके, joke with ID this is deleted। इतना ही करना था। क्या करना था, हमें delete मेथड यूज करना था, उसमें हमें /ID पे डालना था, एंड देन यू विल हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट और सेव कर देना। सो तुम्हें यहाँ पे भी दिखता है लाइक गेट पोस्ट गेट पुट डिलीट। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाता है कि कौन सी रिक्वेस्ट क्या है एंड व्हाट यू हैव डन। सो फटाफट से आई विल गिव यू 5-10 मिनट्स। तुम लोग अगर कहीं पे भी टैग कर रहे हो तो डू मेंशन कि हमने इधर टैग किया, सो दैट वी कैन चेक। And we'll announce the giveaway winners soon. Till that time, what I'll let you know is ki what is the student expert program. So whenever like आज हमने जो किया ना get put post update, same thing would be into this student expert program, but with some advanced features like parameters, API keys, and your ID passwords ऐसे करके they will be teaching you more sophisticated way। and आज हमने किया it is very basic। Then next session we might be having offline session on API 102 जिसमें we'll be making an API using Node.js, and फिर हम उसको टेस्ट करेंगे
एंड API 103 में हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे, बैक एंड बनाएंगे, पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे. सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ API प्रोग्राम्स. तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा एक बेसिक टेस्टिंग. API 102 will be coming up in maybe in RCOEM और YCC, जहाँ पे भी हम will be trying. और फिर वहां पे विल बी मेकिंग अ फुल बैकएंड फ्रॉम नोड एंड उसको डिप्लॉय करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे. एंड API 103 में हम पूरा एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसा मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाया वैसे विल बी मेकिंग सम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी तुम लोगों को अच्छा लगे. और उसके बाद व्हाट मेन थिंग इज कि तुम इस स्टूडेंट एक्सपर्ट प्रोग्राम से एक सर्टिफिकेशन ग्रैब कर सकते हो API टेस्टिंग का. एंड साथ में तुम लोग अपने आप को एक सर्टिफाइड पोस्टमैन स्टूडेंट एक्सपर्ट बता सकते हो बाय कंप्लीटिंग दिस होल प्रोग्राम. एंड इसमें तुम्हें कुछ भी डाउट्स आते हैं, फील फ्री टू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड ऑफ GFG, जहाँ पे वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो लिंक मैंने पहले डाली हुई थी मीट में. And if you have by any chance tagged us somewhere, so do let us know. Yeah, I'll surely send the link again. किसी को कुछ डाउट्स है? नाउ यू वर आस्किंग सम डाउट्स प्रीवियसली कि कोड में कैसे करेंगे एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू यू कैन आस्क राइट नाउ आल्सो. अगर कुछ है तो आई विल बी हैप्पी टू क्लियर थिंग्स आउट. Guys, you can ask doubts in chat box, or better it is that you can turn on your mics and ask him directly. हाँ ले लूँगी. हाँ हाँ बैठ ले, मेरे को क्या प्रॉब्लम है अगले इसमें, मेरा चलता. ठीक है. Guys, you have any doubts? Yeah, the Q&A session is open. Like some of you were asking कि chatbots कैसे बनाए, and also इस किसी को और भी कुछ doubts होगा, so you can ask. Guys, I would like to announce one thing is that to get certificates of this session, I will be posting a feedback form link in the chat box. Just wait and just fill that form so that you can receive your certificate. So it is like giveaway. We have two things in giveaway. Like the person who is sharing his learnings on LinkedIn would be getting one surprise. Someone who is sharing on Instagram would get one surprise, and someone who is sharing on Twitter would be getting a surprise. And if any one of you who is interested in getting a whole gift hamper or a hamper from Postman, then you will have to write blogs or LinkedIn posts. So we'll be selecting the best LinkedIn post and the best blogs out of like top 10, 5 LinkedIn posts and 5 blogs, which will be sent to Postman team, and they will be sharing some great goodies, which would be a temperature sensor water bottle. You'll having a diary, a T-shirt, then you'll having some stickers of official Postman. एक ऐसा पूरा डब्बा बन के आता है, which has some great things. तो जिसका भी हो गया है, you have these all social media platforms. You just have to tag either me or Saksham, and you have to tag either the GFG chapter or Agnitok, and also you have to tag Postman like hashtag API 101.
So that would be easier for us to find your posts. So like I have got one from Shubham right now. Uske alawa we also have Tejas, जिसका अभी तक मुझे like 2 लोगों के tags आए हैं. Hey guys, just have your attention is that please fill out this feedback form which I have posted in chat box and it will be open only for 10 minutes. So hurry up guys. After filling out the feedback form, just post a thumbs up reaction in the chat box. किसी को anyone has any doubts they can ask, like how had I integrated my APIs, what all doubts you have regarding APIs or any other development stuff, you can surely ping. Like, acha, our Discord isn't working. Are you trying to put some messages, Alo? Yeah, I could see people joining, so try it once more. कुछ एक चीज पूछना था. API 102 जो होने वाला है, सो उसमें लाइक आप क्या बताने वाले? मैं जस्ट अभी थोड़ा भूल गया था. सेकेंड वाला जो होने वाला है, इसके बाद वाला. सो आपने लास्ट वाला 103 में बोला था कि उसमें अपन फुल स्टैक पूरा करने वाले, लाइक एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड API इन बिटवीन, राइट? यस यस. एंड उसके पहले जो होने वाला है वो कौन सा है? उसमें That is where we'll be making the backend. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पहले backend बनाएंगे और उसको फिर हम, जैसे अब मैंने लोकल होस्ट वाली लिंक्स दिखाई थी तुम्हें, हाँ मेरे प्रोजेक्ट की, तो वैसे ही हम लोग टेस्टिंग करेंगे एंड फिर उसको डिप्लॉय करके फिर से टेस्ट करेंगे कि जो डिप्लॉयड लिंक आई है हमारे पास में कोई सर्वर की, वो कैसे टेस्ट होती है. तो दैट वुड बी बैकएंड. फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसी के लिए एक फ्रंट एंड बना के इंटीग्रेशन सीखेंगे कि बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं. how are we going to code those requests, like get request, post request, हम कैसे कोड करके उसको वाया बैकएंड सेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम वाया पोस्टमैन सेंड कर रहे हैं. यस. तो देयर विल बी सेइंग वाया बैकएंड कैसे करेंगे. बढ़िया. ओके, थैंक्स. अच्छा, सो एनीवन जिसने लिंक्डइन पे भी कभी कहीं कुछ किया है टैग बैक, तो लेट मी सी. Okay, so I guess we have Saksham, तुमको कुछ टैग्स आया? No, not yet currently. Cool. So I've got 2 guys. अपन ने अपनी आईडीज मेंशन कर दी है ना व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों टैग कर दो गाइस. कर दिए. विदिका एक बार फिर से डाल दो. ओके, लिंक्डइन आईडीज. Yeah. Guys, for the giveaway, you have to like click on the link. You have to connect Saksham and Kush. I'm posting the link once again.
हाँ हाँ श्योर, यू कैन टेक टाइम गाइस, मतलब थोड़ा टाइम लो। ओके, जो सेशन के की टेक अवेज थे ना वो सब आप ऐड करो एंड एट लास्ट विल टेक ब्लॉग द एंड फोटो। लिंक्डइन वुड टेक टाइम, बट तुम लोगों ने जो भी कोट वाला टास्क किया है दैट यू कैन शेयर योर स्नैप्स कि तुम लोगों ने क्या किया है। सो इट इज इट बिकम्स मोड ऑफ वैलिडेशन फॉर अस ऑल्सो कि तुम लोग सही में किए कि नहीं किए, राइट? करंटली जो जो टास्क है ना वो डाल दो कि आप, एंड टैग मी एंड खुश। ओके, Guys, also check your WhatsApp groups. I have posted link of the Agnish Sok Department Magazine, YCC, as well as Geek for Geeks chapter RCOM Instagram link. So tag them also and follow them also. so guys, we have told you that we are going to have a giveaway on Instagram, uh, one on LinkedIn, and also on blog writing. So try karo guys as much as possible. And currently I can see 60 people have filled the feedback back. Rest please do it fast, everyone. And if you are done with the feedback, just put in the chat box that I filled the feedback. Okay, that's good. Yeah, it is over. बट एट लास्ट अपन एक फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है, सबका एक साथ में, एंड देन यू कैन पोस्ट इट ऑन योर लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, ऑलराइट, एट लास्ट। ओके, कुछ कुछ माइक ऑफ है। अच्छा सॉरी, जितने भी लोग कैमरास ऑन कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, जस्ट कीप योर कैमरा ऑन सो दैट वी कैन हैव अ गुड फोटो। Guys, before ending session, we are having a selfie. So just turn on your cameras. I would like to request each one of you. आदेश पेपर है ना तेरे पास? नहीं, इसके अलावा we'll have some screenshots also. तो किसी को कुछ पोस्ट करना होगा something like this तुम कर सकते हो, no worries. Feel free to post guys, ठीक है, and so make sure to tag me and Kush, okay, as well as I'll, hashtag on API count of 3 we'll have a photo. So 1, 2, and we are going 3. हाँ हाँ वो जाएंगे ना फिर वो आज का पूरा क्लास चल रहा है तो देख रहे हैं। Great to have for attending the session, and see us soon in the upcoming events at even at RCOM or YCC in the 101 or 102 or 103. Wherever you feel it is interesting, do join us. Yeah. Thank you, Kush, for your wise words. I think everyone might be knowing what is about API, and I think everyone has got a great experience on hand-on on API Postman. So, guys, before we end this session, I would like to ask anyone that is there anyone still left that anyone has any doubts regarding or any question related to API? Yeah, if you have any doubts you can surely ask, no worries. And इसके बाद में भी कुछ doubts आ रहे होंगे, so you can connect on LinkedIn also. Okay. So basically, I would like to request you all that let us connect each other on IG, LinkedIn. So basically, I would like to request all that I have shared some profile URL in the chat box that is of LinkedIn and IG. Do follow Saksham, Kush, as well as me on IG as well as LinkedIn.
So thank you, all of you, for giving your precious time for our today's session. That is also in Sunday morning. So thank you very much. You guys can leave. Thanks a lot, guys. We'll have an offline session soon. See you. Anyone want to say or anyone want to feed any message to Saksam or Kush? So you can speak up Yeah, I've also given notes and about just session that did you like or do you तुम want any more बता सकते हो sessions? कि if you want some feedback देना होगा कि यार it was a bit slow paced या फिर fast paced कुछ होगा ऐसा तो you can tell us, we'll try to improve in upcoming sessions also. any feedback, guys? Hello. So I have a question actually. Sure, sure. We have seen that APIs can be used to like type datas and so much. So are there any chances that there can be data leaks? Like we are writing the sensitive datas, we can also write financial informations of this, and it can be used to launch DDoS attacks. So is there any chances that it may be vulnerable? Okay, so there are chances are when you are trying to make your own APIs, right? अगर तुम खुद के लिए एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो और उसके अंदर तुम खुद की एपीआई बना रहे हो, जैसे अपन 102 में बनाएंगे नोड के ऊपर, एट दैट टाइम यू माइट हैव exposed API points, but just a second. सक्षम 102 कब ऑर्गेनाइज होगा? I'll notify you, okay? Cool. Currently your CRT is going on, that's why I'm not even be online rakha. Okay. Okay, so Kaustubh, as I told you earlier about API key, right? So API key is secure, so there are so less chances if data exposed, like some it happens rarely, like 0.0001% something like that. So API key जो होता है, as I told you earlier कि इसने भेजा है तो उसी को ही आएगा, बट इवन इफ समवन ट्राइड टू एसेस इट, करंटली तो मतलब कर नहीं सकते क्योंकि भाई सिक्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है और होता भी है तो बहुत रेयरली होता है, सो इट्स सेफ फॉर अस. Yeah, okay with that. Yeah, let me add one more thing. Like कौस्तुभ, अगर आपका security related question है in terms of API, so basically what happens, corporate के हिसाब से बता रहा हूँ, like what they do is they give an encryption to the API जो भी हम request भेजते हैं ना, तो like अभी कैसा, अभी हम लोग ने Postman में सारी चीज़ देख पा रहे थे, right? So जब हम corporate level पे वो चीज़ें अपन जब get post put करते हैं, so the only thing that will be exposed to the, like हमने यहाँ पे एक public वो बनाया था, right? कैसे जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो वही चीज दिखती है जो कंपनी अलाउ करती है, राइट? और बाकी की जो चीज जो आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, वो सारी इंटरप्टेड होती है अलग अलग एल्गोरिथम से. Yeah, like in the form of hash value, no? करेक्ट. हैश, SIJ 256, ऐसे टाइप के एल्गोरिथम्स हमारे पास होते हैं, तो डिपेंड्स. Yeah, great. Okay, नहीं that's तो फिर all. पूरा ही डेटा हमारे पास दिख जाएगा ना हमको, हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो कोई भी जाके देख लेगा उसको. Yeah. Yep. Thank you. Thanks a lot. और कुछ, sorry for the interruption. Does anyone has any more questions or doubts? I just wanted you to do it by your own, guys. If you do slowly तुमको फिर doubts आने चालू हो जाएंगे, like errors तो आएंगी, problems भी आएंगी, but try करो, ठीक, खुद से करने का try करो. Okay, if you feel any doubt is coming, just ask us in the group. It's open for all. आज वैसे भी या Sunday ही है. कुछ सक्षम, एक चीज और था यार मेरे को, हाँ सर. लाइक जैसे अभी कुछ ने वो जोक वाला एपीआई शेयर किया, वैसे अगर और एपीआई मिल जाए तो अच्छा रहेगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस. हाँ, so for that, you know, तुम लोग जब पहली बार पोस्टमैन खोलते हो, you can हाँ go to public workspaces ओके. and you will get some good APIs of Twitter भी है, हाँ फिर हाँ हाँ Facebook यस. की है, COVID-19 databases की भी है, so you can Okay. try and play around with those ओके. and then tell कि कुछ अगर तुम्हें दिक्कत आती है तो we'll बढ़िया. be happy to help you. श्योर डेफिनेटली. सिंपली जस्ट पोस्टमैन का ये जो है ओपन करो, उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है. यस.
as you open it, just a second, go to workspaces and all that. ब्लैंक वर्क स्पेस इधर आपको मिल जाएगा बेसिक्स ऑफ एपीआई के लिए। यहाँ पे आप सब एसेस कर सकते हो और मतलब सब कुछ एक्सप्लेन है इधर कि कैसे है, कौन सा मेथड यूज़ कैसे करना है, गेट मेथड के लिए उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो क्या काम आता है, उसके बाद पोस्ट मेथड का क्या काम आता है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर वेल। And if you get doubts you can also, and guys you can also do the Postman Student Expert program also simply by going Postman Student Expert program, ये भी सब try करो। Okay, here you can learn from the scratch everything what you want to learn from the Postman. Here they also provide the badges also. This one I have, this one, and all the things. You can simply go enroll to become a Postman student leader, and you can register your fill these details. Okay, yeah, swags you will get, it is based on the giveaway. Okay, uh, for the swags what you have to do is you have to post the blogs and on the LinkedIn, on the Instagram as well as Twitter. Okay, and don't forget to tag me, push, GFGRCOEM, Agnistok YCC, as well as hashtag API101. Okay, just explore, there are a lot of things here. Okay, leader program, classroom program, you can learn it from the scratch there. Okay guys, I hope you all learned a lot from this session. If there are any more questions or anything you want to share, your personal experience, you're free to share. Or else we are free to end the meet. All right. All right. So we should conclude the meet. Thank you everyone. Thanks for joining. Thank you, guys. You can leave the meeting. Bye bye everyone. Have a nice Sunday.